सो हेलो व्यूअर्स। आज का हमारा ट्यूटोरियल है व्हाइल लूप के बारे में। सी प्लस प्लस व्हाइल लूप एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स को एग्जाम्स, इंटरव्यूज और प्रोफेशनल्स के रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट दोनों जगह काम आता है। चलो इसको हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं दोनों पर्सपेक्टिव से। सो व्हाट इज अ व्हाइल लूप? सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपली पुट, व्हाइल लूप का मतलब है जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक काम करते रहो। अगर आपको एक ही काम बार बार रेपिटेटिवली करना है तो आप हर बार मैनुअली कोड नहीं लिखोगे, आप लूप का यूज करोगे। रियल लाइफ एनोलॉजी, कॉलेज स्टूडेंट वर्जन, जब तक स्क्रीन पर लो बैटरी का वार्निंग नहीं आता तब तक रील्स स्क्रॉल करते रहो। और प्रोफेशनल वर्जन, जब तक सर्वर से HTTP 200 सक्सेस रिस्पॉन्स नहीं मिलता तब तक API को रिट्राई करते रहो। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशनल वर्जन एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉलेज स्टूडेंट वर्जन। जब तक स्क्रीन पर लो बैटरी का वार्निंग नहीं आता तब तक रील्स को स्क्रॉल करते रहो। तो आइए इसका सिंटेक्स, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन और ड्राई रन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। A while loop is best used when you don't know exactly how many times you need to repeat something. The while loop is also known as long as loop. But you know the condition that must remain true for the loop to continue. So you know the condition, but you don't know exactly how many times you need to repeat something. So logic is check condition, if true, execute code, repeat. Best practice is always ensure the condition changes inside the loop to avoid an infinite loop. Let's write a program, make a new file inside the example folder, e.g. while loop hash include iostream int main int health is equal to 3 while health greater than 0 std cout player is alive health health std and l. Health minus minus, close the curly brace. So the condition of the while loop here is while health is greater than 0. It should not be equal to 0, but should be greater than 0. And then you have to execute these statements. Cout player is alive, health, 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 and health minus minus. After this loop ends, inside the main method, the next statement is cout game over. Std and l. Now compile and run this. So as we can see here, it is giving us player is alive health 3, player is alive health 2, player is alive health 1, and at last it is giving us game over. So game over is the statement which is going to execute after this loop ends. It is not inside the loop. And how many times this loop it iterates is a fixed number of times while health is greater than 0. So while health is greater than 0, and we have to give here the increment or decrement variable for health, assignment operator, which is health minus minus. This means health is equal to health minus 1. Health minus minus means health is equal to health minus 1. So inside this loop, every time it is going to decrement this health and it will run
till health is greater than 0. So as we have given here, initialized health is equal to 3. So it will start from 3, then it will get reduced. So when it is 2, player is alive. When it is 1, player is alive. And at last, it's going to give us game over. So this is the while loop. When a condition, it runs, when we know how many times the loop has to execute, we know the condition, and we have to give this variable, the change the value of the variable, which is the condition. So we have to change the value of this variable inside the loop itself. Otherwise, it will go in infinite loop. If we don't do here health minus minus, then this loop will be useless. It is going to execute to infinity. फ्लो चार्ट ऑफ अ वाइल लूप. एक वाइल लूप हमेशा एंट्री कंट्रोल होता है, यानी अंदर जाने से पहले सिक्योरिटी गार्ड कंडीशन चेक करेगा. स्टार्ट चेक कंडीशन, अगर ट्रू है एग्जीक्यूट लूप बॉडी, अपडेट वेरिएबल, और अगर ये फॉल्स है कंडीशन तो एग्जिट लूप. अब इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, प्रिंट कराया है 1 से लेके 5. ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा इंटरव्यू में ज्यादातर पूछा जाता है. अगर आप आई प्लस प्लस लिखना भूल गए तो आई हमेशा 1 रहेगा. 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 हमेशा ट्रू होगा, और आपका कंप्यूटर क्रैश होने तक स्क्रीन पर 1 प्रिंट होता रहेगा. इससे इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, जिसको हमको अवॉइड करने के लिए हमको जो आई की जो वैल्यू है उसको हमको हमेशा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ेगा. अब प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो क्लीन कोड और रियल वर्ल्ड यूज केस के हिसाब से प्रोफेशनल लूप का यूज तब करते हैं जब उन्हें पता नहीं होता कि लूप कितनी बार चलेगा. अनलाइक अ फॉर लूप जहां हमें एग्जैक्ट काउंट पता होता है. फॉर लूप में हमें एग्जैक्ट काउंट पता होता है, लेकिन वाइल लूप में हमें नहीं पता होता है. तो रियल वर्ल्ड सिनारियो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको नहीं पता कि एक यूजर की अपलोड की हुई फाइल में 10 लाइन्स है या 10,000 लाइन्स है, वहां वाइल लूप परफेक्ट फिट बैठता है. अब प्रोफेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हम देखते हैं. अवॉइड वाइल ट्रू विदाउट एन एक्सप्लिसिट ब्रेक. प्रोडक्शन कोड में वाइल ट्रू लिखना डेंजरस हो सकता है. अगर आपको लगाना ही है तो एंश्योर करो कि अंदर एक क्लियर ब्रेक कंडीशन हो जो नेटवर्क टाइम आउट या एरर पर ट्रिगर हो. दूसरा है थ्रेड ब्लॉकिंग. अगर आप बैकग्राउंड थ्रेड में कंटिन्यूअस डेटा लिसन करने के लिए वाइल लूप चला रहे हो तो लूप के अंदर एसटीडी दिस थ्रेड स्लीप फॉर का यूज करो, वरना लूप 100% सीपीयू कोर कंज्यूम कर लेगा. तो मिलते हैं अगले टॉपिक में जो कि होगा फॉर लूप के ऊपर.